Yes, sir. All right. Now we know that there is a reaction distance which is F. For different kind of ships, we know we have the value 0.2 miles for very large vessels, 0.15 miles for large vessels, and 0.1 mile, one cable for medium-sized vessels. So for this, we do another construction. From this point, whatever the distance F is, we drop a perpendicular here on this extended line. This is 90 degree. This point we have named as R. Let us say P, Q, R, S बोल देते हैं इसको. So from S to T, we have dropped a perpendicular. Now in this, can you tell me the angle R? ये कितना एंगल होना चाहिए? Course. नहीं, एंगल कितना होगा? Alteration. This is theta. Yes, sir. Yes, sir. Same line cutting here, so this is also theta. Yes, sir. This is the parallel line, so this is also theta. Yes, sir. And then R is also theta. So R is also theta. Sorry, theta. So in triangle SRT or TRS, if we see what is the value of ST, again we have this one as hypotenuse and this one as perpendicular. Is it sine theta is equal to P upon H. perpendicular by hypotenuse? Yes, sir. So that means P is equal to H sine theta and H is F. So F sine theta. That means ST is F sine theta. So we already have this distance which is R into 1 minus cos theta from here to here. And from here to here, we have F sine theta. So the total distance is given the name of T, which is this plus this. Is it okay? Yes, sir. So what we do in order to draw the final course, or sorry, wheel over line, we take this reading. Final course देख लेते हैं क्या है. We calculate the value of T using this formula. T is equal to R into 1 minus cos theta plus F sine theta. Either which way, this plus or this plus, whatever. We calculate the value of T. मान लीजिए for example 0.45 माइल आता है, तो 0.45 माइल का डिस्टेंस रख करके आप एक आर्क काटिए, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए. ऐसा जो भी टी की वैल्यू आई है उस टी की वैल्यू से आप मार्क कीजिए एंड कीपिंग द पैरेलल रूलर you draw a line like this. This line is wheel over line. And where this wheel over line intersects the initial course is your लास्ट वाला फिर से बता दीजिए सर. हाँ जी सर लास्ट वाला पार्ट फिर से बता दीजिए सर. Okay. When we have to plan, okay, again, let us say we are planning the turn. आपको दिया हुआ है कि 2 माइल रेडियस के साथ एक रडार ऑब्जेक्ट के अराउंड plan the turn. So since the radar object is there, number 1, we identify the object. Number 2, we decide the radius. Number 3, we draw an arc of the radius that we have decided. Next,
we draw the initial course and final course tangential to the arc. So the turning is planned already, but we also have to put wheel over point, because the recommendation, as we say, that the courses have to be drawn as a straight line or as an arc of a circle with wheel over point mark. So now the second part is that we have to calculate and mark the wheel over point. So for that, we calculate the value of t. How do we calculate? What kind of shape we have? Is it medium shape, large shape, or very large shape? If we say 150 meters, LOA 150 meters, we'll consider it medium shape. 200 to 250 maybe large, over 200 maybe very large, whatever. जो भी आपने decide किया है, कोई specific length नहीं दिया हुआ है. So maybe you can take, for example, 100 to 150 is medium shape, 150 to 200, let us say 200 is large shape, and 200 and above is very large shape. So according to this, you will find out the value of F. जो भी जहाज के लिए आप प्लान कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन में होना चाहिए what kind of ship you have. Mostly LOA will be given, or very heavy GRT will be given. So with this information, you have the value of F, then F sin theta. ऑल्ट्रेशन कितना है? मान लीजिए ये इनिशियल 020 डिग्री दिख रहा है, ये मुझको 085 डिग्री दिख रहा है. सो द ऑल्ट्रेशन इज हाउ मच? 65 डिग्रीज ऑफ ऑल्ट्रेशन. सो यहाँ पे 65 डिग्रीज दे करके आप कैलकुलेट कीजिए. वेरी लार्ज वेसल 0.2 इंटू साइन 65 डिग्रीज प्लस आपने कहा था कि 2 माइल का रेडियस होगा. So 2 into 1 minus, nice, r into 1 minus cos theta. Okay, cos 65 degrees. इससे you calculate the value of t. Having calculated the value of t, जो भी value आती है, इतना माइल्स आता है, इस लाइन से एक डिस्टेंस कट कीजिए which is equal to this 1.33 sir. Okay, very good. अगर इसमें आ गया तो 1.33. तो यहां से यहां तक का 1.33 माइल्स का एक आर्क कट कीजिए कंपास लेके एंड पैरेलल रूलर लेकर के, और यहाँ पे आप इसको एक लाइन ड्रॉ कर. So this one is wheel over line and this one is wheel over point. Now here what we have to do is show this calculation. We have to write the steps of planning the turn. So what we have done, we have a radar object, the arc is planned, the wheel over point is marked. आपने प्लानिंग कर दिया, थर्ड मेट आया हुआ है, उसके टर्न, उसके इसमें टर्न आ गया, उसके वॉच में the ship is coming. He knows that when we hit this place, this is where I have to give helm so that the vessel will go and start turning from this. Initially, it will not respond. This is the distance F. When it is not responding, then it begins to turn. And depending on the execution that you're doing, the ship either may go on this constant radius or may go like this, constant ROT. पैरेलल नहीं हो रहा.
अब थोड़ा पैरेलल हुआ. So are we good here? Yes, sir. Yes, sir. For second mate, planning is only around the corner, गोल वाला. आपके लिए wheel over point is a must with calculation. ठीक है? Depending on the question also. Question में क्या पूछ रहा है, that you have to see. But in most cases, if you have the radius and if you have the type of vessel, even if not, you assume कि considering that I am sailing on such and such kind of vessel, the reaction distance being so and so, wheel over point will be like this. Calculation देके T का distance is equal to 1.33 miles लिख दीजिए और line खींच दीजिए. Only not to scale, only to this show the calculation and your knowledge. Yes, are we good? Yes, sir. Okay. Another thing. So you have the wheel over point here. This is the place where you are going to give the rudder. If there is a current from this side, the vessel that you are turning is here. When you are turning like this, is the current pushing you like this? Will it take you out of the turn because of the current Yes, here? sir. Yes. If you are going like this and there is a current, will it push you inside here? Yes. This is the condition wheel over point when there is no current. But if there is a current this way or that way or this way, supporting or opposite, this side, then is it the same place we are going to give the rudder? Let us say we are coming at 14 knots as we said. Is this the place where we are going to give rudder? Because we know in no current condition, if we had given the rudder at this place, the vessel is going to turn like this. This was the plan. But if there is a current, this definitely is not going to happen. Is that understood clearly? Yes, sir. The vessel will be pushed out. She will go out of the turn. इधर में buoy है, channel है, shallow patch है, कुछ भी है. You are going to run aground here. So this current, how is it going to affect your wheel over point, or what kind of action will you take? One common sense what is looking at कि अगर हमने यहाँ पे रडर दिया, हेल्म दिया, तो जहाज बाहर जा रही है. तो बाहर जा रही है तो इज इट ओके दैट आई गिव द रडर समवेयर अर्लियर ऑन, कि घूमता हुआ भी आकर के यहाँ पे कहीं पहुंच जाए? कॉमन सेंस कहता है कि नहीं कि यहां से देता हूं तो यहां पहुंचता हूं, पहले दूंगा तो यहीं रह जाऊंगा. Yes, sir. दैट मीन्स लुक्स लाइक कि हमें पहले देना चाहिए. नॉर्मल केस में मैं यहाँ पे रडर दे रहा था तो बाहर निकलता, नहीं सॉरी, नॉर्मल केस में यहाँ पे आता. यहाँ पे दे रहा हूं, करंट है तो मैं बाहर जा रहा हूं. अगर मैं पहले दूंगा तो बाहर की जगह जितना पहले यहाँ था इतना बाहर जा रहा हूं, तो इतना मैं पीछे हो जाऊं, तो यहाँ से चांसेस कि मैं आई विल बी गोइंग थ्रू दिस, कमिंग समवेयर हियर. So next we are going to take this point. What is the effect of current on the wheel over point? But before going to that, आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन की उम्मीद कर रहा था जो आपने नहीं पूछा अभी तक. अगर जहाज यहाँ पे है, व्हील ओवर पॉइंट ये है,
जो कि यहां से F की डिस्टेंस पहले है, तो भाई इतना टी टा करने का क्या जरूरत था? यहां से पहले 2 केबल पहले जब मैं पहुंचूंगा तो यहां पे रडर दे दूंगा 2 माइल पहले। तो इतना ये लाइन और ये सब करने की क्या जरूरत? थिंक, गिव any plausible reason why we did all this wheel over line, drawing this, and then coming to this. Think. The reason is that it is okay if the vessel was coming from here, it was okay, you can do it. But for some reason, if the vessel is approaching from here, and if you have no wheel over line, अगर आप ट्रैक पे आ रहे होते तब तो बहुत अच्छा था, यहाँ पे आप दे देते इतना 0.2 माइल पहले. Now if you are coming from here, now where do you give the rudder? कहाँ पे रडर दिया जाए? Or if you are a sport of the track, if you are coming from this side, where to apply the rudder? अगर आप ऑफ ट्रैक हो चुके हैं and still approaching the turn, then where do you give the rudder? Now think, in the condition you are not having an answer, see if you have the answer. Do you have the answer where to give the rudder? Yes, sir. Yes, sir. Where it intersects the initial course. So this gives you an answer. That line told you जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे रडर देनी है. यहां आएंगे तो यहाँ पे, यहां आएंगे तो यहाँ पे. होगा क्या? तो यहां से जाके यहां मिल जाएंगे, यहां से जाके यहां मिल जाएंगे, यहां से जाके यहां मिल जाएंगे. We are able to catch the final course even if we are off track. We can still hold on to this final track depending on where we are going to give the rudder or apply the helm. Sir, I have one doubt. Please go ahead. सर, ये जो हमने कैलकुलेशन किया था इनिशियली जब व्हील ओवर लाइन का, ये हमने एक रेडियस लिया था उस पॉइंट से. अब जब हम ऑफ ट्रैक हो जाएंगे इधर टू द पोर्ट साइड और स्टारबोर्ड साइड, तो हमारा आर भी चेंज हो जाएगा. आर नहीं होगा चेंज, आर कांस्टेंट रहेगा. तो the point around which you were turning, this object was there, which was radar object. आपका radius था यहाँ से, this was the turn. You were maintaining the radius like this. If you were coming from here and going here, won't you be able to do this same thing, which is R and R and R? If you approach from here, will you not make the same turn with the same radius? बट सर जो लेफ्ट वाला केस लिया आपने, उसमें जो हमारा एंड पॉइंट है वो पहले थोड़ा होगा, वो तो एंड पॉइंट तो सेम ही रहेगा ना, हमें जहाँ जाना है जो नेक्स्ट कोर्स है. हाँ, यहाँ पे तो दोनों एक ही जगह. यही तो फायदा है व्हील ओवर लाइन का. व्हील ओवर लाइन का फायदा ही तो यही है कि हम इधर ऑफ ट्रैक भी हो गए तो भी वी आर एबल टू कैच द फाइनल कोर्स विदाउट एनी डेविएशन. यहाँ पे ऑफ ट्रैक होने की संभावना नहीं होती. हम इधर उधर पहले हो गए तो भी जाकर के हम यहाँ सीधा घुस सकते हैं, अपने ट्रैक को पकड़ सकते हैं. तो रेडियस चेंज नहीं होती.
सर मेरा ये डाउट था कि जैसे आपने इनिशियली ये वाला ड्रॉ किया, हाँ जो पहला right, आपने फिगर ड्रॉ की थी, हाँ जहाँ पे आपने RRR लिखे हैं 3R, तो सपोज हमारा ये इनिशियल, इसको नहीं, पहले वाली फिगर में, हाँ जी, यस यस श्योर हाँ, इसका जो हमारा एंड पॉइंट है वो है B, और ये जो आपने आप इसको भी बोल रहे हैं। हाँ जी सर, और ये ऑल्ट्रेशन कोर्स को सपोज दे दो C पॉइंट। ये ऑल्ट्रेशन कोर्स को यहाँ पे नहीं नहीं, ऑल्ट्रेशन, हाँ जी, कोई भी पॉइंट दे दो सर। अच्छा और मान ये है मेरा, लीजिए ए बी और बी सी मान लेते हैं। ये पॉइंट जहां से हमने टर्न करना था वो सी, यहाँ वे पॉइंट ए, फाइनल कोर्स जहाँ पे खत्म हो रहा है बी। राइट सर, तो मतलब बेसिकली जो मेरा नेक्स्ट कोर्स है वो A से स्टार्ट हो रहा है, और मैं C से स्टार्ट करूंगा टर्न करना, देन आई विल बी गोइंग ऑन माय नेक्स्ट कोर्स AB। हाँ अब वही चीज मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं पोर्ट साइड में आ गया, सपोज C डैश पे आ गया। सी डैश पे आ गए। राइट, अब C डैश पे मैं अगर टर्न करना स्टार्ट करूंगा, मेरे को पहुंचना कहाँ है, B पे ही पहुंचना है ना सर। हाँ तो आप पहले यहाँ पे पहुंचेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए जाएंगे और बी पे पहुंच जाएंगे। ओके ओके, गॉट इट। अगर आप यहाँ पे टर्न करते हैं, यहाँ पे पहुंच रहे थे, तो विल टर्न हेयर, बी से आगे निकल के आप यहाँ पे जहाज को आगे ले जाएंगे। ये वाला पार्ट नहीं आएगा आपके इसमें। ओके सर, तो बेसिकली हम थोड़ा आगे चले जाएंगे, बट हमारा रेडियस कांस्टेंट रहेगा, और नेक्स्ट थोड़ा आगे जाके ज्वाइन कर जाएंगे हम उस कोर्स को। एग्जैक्टली दैट्स द मीनिंग। अगर ये आपका फाइनल कोर्स है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो, या यहाँ पे ज्वाइन कर लो, या यहाँ पे ज्वाइन कर लो, या यहाँ पे ज्वाइन कर लो। दैट इज व्हाट हियर वी आर गेटिंग इनटू इट इज चेंजिंग, बट ऑल द while it is the same course. ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। Okay. So I will share the screen. I will make you write a question about wheel over point जो अभी हमने डिस्कस किया था. You first take down the question and then we see how to solve it. So allow me to share the screen. मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। Okay, write down this question. Tell me when you're done.
The last line, assume no drop of speed during the turn, is to simplify the situation so that we are concentrating on the current part more than the other part. अगर drop speed हो रही है, then we have to take that into account. अगर question में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, so you might have to consider that there is a speed drop, and accordingly you may have to do that. But here we are concentrating on the current part, how wheel over point is getting affected by the current. Have you finished? Yes, sir. Okay. What we are going to do is giving you the steps to follow in order to solve this question. Steps to follow to solve this. So you can write down these points. Have you finished till point 7? Not yet, sir. Okay.
shifting little bit. Tell me when you are done. Yes, sir. Done. Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. All right. So let me go to the board once again. So what is the initial course? 015, I suppose, right? Yes, sir. 015. The final course is 087. How much is the angle of alteration? 72 degrees. We do the planning. What is the condition given? Is it radar object or imaginary point? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? Please speak. Nothing. Nothing. So you make an assumption. Assume. जो जरूरत की चीजें हैं जो आपको चाहिए इसके लिए, if not given, clearly write your assumption that okay, planning the turn around a radar conspicuous object or turning around an imaginary point. जो भी लिखना है वो लिख दीजिए. So here you have the radar object. So you are drawing this arc and drawing the initial and final course. Planning this part is done. Then you are calculating P. Theta is equal to 72 degrees and radius. Radius is how much? 2 mile. 2 miles. R is equal to 2 miles. So you calculate T. Please tell me what is the value of T. सर अगर f की वैल्यू नहीं दी हो तो क्या लेंगे फिर हम? What is the length of the ship? 250 meter. So 0.2. So you will consider this as very large vessel or not? इसका मतलब ही है ये देने का. LOA दिया हुआ है. That is an indication of the kind of ship that you are dealing with. So that means F की value is 0.2. So वो भी हमें लिखना पड़ेगा assumption या नहीं डायरेक्टली लिख देंगे हम कि LOA is 250 meter. So considering 250 meters of LOA as large vessel or very large vessel, and hence F is equal to 0.2, and so T is equal to 0.2 sine 72 degrees plus 2 into 1 minus cos 72 degrees. Answer जो भी है 1.57. 1.57. So we have calculated
1.57. तो 1.57 माइल्स का एक हम आर्क कट करेंगे और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, which is the WOL, and we identify the WOP. Next, we draw the line 340 degrees, which is the direction of the current, and opposite to that, we extend the line. ये आएंगे इसके ऊपर, उसके पहले. From here to here, there will be a distance, and from here to here, this is 0.2 miles. From this point to this point, reaction distance 0.2 miles. We know that this is 72 degrees. So D is equal to R alpha, where alpha is in radians, remember yesterday's derivation, or this is equal to R into theta by 57.3. Theta being 72 degrees. That means R into 72 degrees. That is the distance D. Yes, sir. So what is the value of D? So 2.51. Total distance is equal to D plus F is equal to how much? इतना आया? So 2.71. 2.71. तो यहां से जहाज जब टर्न करना शुरू करता है तो यहां से यहां तक आने में she is traveling 2.71 miles. All this while when the ship is turning, the current is acting on this. So इतनी देर के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं कि जब एक्शन शुरू होगा हमारा, उस बीच में करंट इज एक्टिंग एट 340 डिग्रीज, और उस टाइम के बीच में आई हैव टू अपोज द करंट. करंट मुझको धक्का दे रहा है, मैं करंट को धक्का दूंगा, ऑपोजिट करूंगा. सो एट द गिवन स्पीड, how much time she is going to take to cover this distance? The ship from here to here, how much time she is going to take? That will be time or distance is equal to speed into time. So time is equal to distance by speed. Distance is this divided by speed. कितना है vessel का speed कितना है? So 12 knots. 12 knots. 12 knots. So time taken will be this. So 13 minutes 33 seconds. 13 minutes 33 seconds. So उसको convert कर दीजिए point में, तो calculation easy हो जाएगा. So 13 point some minutes is taken to complete this distance. All this time when you were trying to turn, the current is constantly pushing for that time. Is that correct? Yes, sir. जब आपने मुड़ना शुरू किया तब से करंट आपको पुश कर रहा है all the while till you come here. आगे भी करेगा, लेकिन यहाँ का और यहाँ का वो आप संभालिए, वो मेरे जिम्मे नहीं है. अभी मेरे क्लास के जिम्मे यहाँ से लेके यहाँ तक का टर्न है. So all that time which you have calculated 13 point something is the time during which the current is acting. So next is to calculate how much of distance will be covered by the current in that much of time, 13 point something. Yes, sir. 13.5 minutes. नहीं, 13.5 मिनट्स तो हो गया. उतने देर में करंट एट द स्पीड ऑफ 2 नॉट्स, करंट का रेट क्या है? 2 नॉट्स. 2 नॉट्स के रेट पे करंट कितनी देर चलेगा, कितनी दूर चलेगा? हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द
current? 27/60. Calculate करके बताइए. So 0.45 nautical miles. 0.45. So what we do, यहाँ से व्हील ओवर पॉइंट से हमने ये एरो मार्क किया है करंट के डायरेक्शन में, उसको हम एक्सटेंड करते हैं और इसमें कट करते हैं 0.45 माइल्स. दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द करंट इन 13.5 minutes. Now we are drawing another parallel line to this or this. ये दोनों तो पैरेलल है, तो इसके एक और पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे. इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. इस पॉइंट से जो हमने डिस्टेंस कट किया. दिस इज द न्यू व्हील ओवर लाइन. And the wheel over line, the new wheel over line, wherever it is intersecting, is the new wheel over point. That means if you were giving the rudder here, you were going to go out. So you give early so that this out is basically turning out to be here. Are we good? Yes, sir. Yes. Yes, sir. It So is इसमें not T का जो- complicated once you have done it 3 times or 2 times also. After that, it is no longer complicated. सर इसमें जो टी का आर काटना है सर, वो फाइनल कोर्स जहाँ से शुरू हो रहा है वहां से काटना होता है ना सर, स्टेप 1 जो है. क्या चाहिए टी? ये सर जो टी फाइंड आउट करके जो हम आर काटते हैं, वो हाँ. आर हम काटेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फाइनल कोर्स, करेक्ट? नहीं, मैं नहीं समझा. टी तो इज अ डिस्टेंस ना. टी इज अ डिस्टेंस विच इज गिवन बाय एफ साइन थीटा प्लस आर इनटू 1 माइनस कॉस थीटा. सर ये जो आपने टी सर काटा है ना सर, वो कौन सा पॉइंट लेके काटा है सर ये? कोई भी यहां से मुझको डिस्टेंस चाहिए. ओके, मैं ये मिटाऊं 1 मिनट के लिए. अच्छा, इधर करते हैं. मेरे पास एक लाइन है, मुझको दूसरा लाइन इससे खींचना है 1.5 माइल्स पे. क्या करूं? इस तरफ को मुझको 1.5 माइल्स पे एक लाइन खींचनी पैरेलल. क्या करूं? सर किसी भी एक पॉइंट से आर्क ड्रॉ कर दो. तो किसी भी एक पॉइंट से मैं आर्क ड्रॉ कर दूंगा, तो ये हो गया ना 1.5 माइल का. हाँ सर. अब मैं इसको रख करके इसे पैरेलल एक लाइन खींच दूंगा, तो ये दोनों पैरेलल हो गए या नहीं? यस सर. तो यहाँ पे हमारे पास पैरेलल लाइन ये वाली है. ये वाली लाइन है फाइनल कोर्स. मैं यहाँ से 1.57 माइल का एक आर्क काटता हूँ. यहाँ काट लूँ या यहाँ काट लूँ या यहाँ काट लूँ, कहीं भी सब तो 1.57 ही आएगा ना. यस सर, करेक्ट. ओके. और फिर यहाँ से मैं इसके पैरेलल लाइन एक लाइन खींचूं तो सबसे टच करता हुआ वैसे ही जाएगा. सबका डिस्टेंस तो यहाँ से वहां तक सब एक ही होगा, पैरेलल है. सेम रहेगा. तो वी आर गोइंग टू टेक t इज इक्वल टू 1.57 माइल्स. कहीं पे भी इस लाइन में कहीं से भी ये एक आर्क कट करो, पैरेलल ड्रॉ कर दो. राइट सर. डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? यस सर, आई हैव अंडरस्टूड. Okay. Any other confusion? Any other confusion? No, sir. So you must remember how to calculate D. D is equal to R into angle of alteration divided by 57.3. F is equal to either 0.2 miles or 0.15 miles or 0.1 miles, depending on the kind of vessel that you have. Either length is given or said in words, very large vessel you are handling.
And sir, in this question need not be up to scale ना sir, ये जो अभी ये वाला question अभी Not करा at all, not at all, not just at to all. demonstrate the understanding. Okay. Just to, you have to depict your understanding that yes, understand this is how calculations are done. It is nothing to do with scale. It is just to do with procedure, process that you have to follow. वो जो steps अभी आपने लिखवाए थे सर वैसे ही लिख के बताना है. नहीं, आपको वो सब स्टेप्स नहीं लिखना है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मुझको करना क्या है, मैं कैसे सॉल्व करूं, तो वो स्टेप्स लिखवाई हैं, वो सब लिखना नहीं है आपको, वो आपको बताने के लिए कि क्या करना है आपको, वो करना है. अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल, if I have to solve this problem to make it black and white clear to you, we will start writing. क्वेश्चन तो हो गया, आंसर में गिवन जो आपके पास फैक्ट्स हैं वो लिखिए. LOA 250 मीटर्स, स्पीड 12 नॉट्स, रेडियस सो एंड सो फैक्ट्स लिख दीजिए. इन ऑर्डर टू प्लान द टर्न, assuming that we are turning around an imaginary point, ये टेक्स्ट में लिखा हमने, तो हमने assumption क्लियर कर दिया. अब हम ड्रॉ करेंगे, ये सब बनाएंगे. जब f की वैल्यू कैलकुलेट करने की आएगी तो वहां पे लिखेंगे सिंस द स्पीड LOA is 250 meters, considering this to be a large vessel, f is equal to 0.2 miles, t is so and so, calculation value t is equal to 1.57 miles. so इसी ड्राइंग में यहाँ पे लिखेंगे 1.57 miles. फिर अगले स्टेप में लिखेंगे the distance d is equal to r into 72 degrees divided by 57.3 is equal to so and so miles, whatever miles. Total distance from here to here, आप point A to C डाल दीजिए, जो भी डालना है नाम. Total distance is equal to D plus F is equal to so and so. Time taken to cover from A to C is equal to so and so. Next step, the distance traveled by the current in this time t is 0.45 miles. Calculated distance divided by time, etc., etc. So सारे figures जो हैं यहाँ पे that you have to show after calculation in the drawing, you must show all the facts. जो drawing आएगी वहां पे आप डालेंगे r is equal to 2 miles, distance t is equal to 1.57 miles, WOL wheel over point, current 340 degrees at 2 knots. Opposite में जो आपने कट किया 0.45 miles. Then you have drawn a next parallel line. You will write new WOL, new wheel over point. This, since we have taken an imaginary point r tan theta by 2, जो प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा.
So are we done? Yes. जो करना है वो स्टेप्स आपको दिए हैं, वो स्टेप्स करके आंसर में स्टेप्स करके दिखाना है। हमें ये नहीं बताना कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे करेंगे तो करो ना, इज समथिंग लाइक दैट। सर केजरीवाल का डायलॉग मार रहे हैं आप। अच्छा ऐसा मुझको मालूम नहीं। ओके, तो those are the steps given you to guide you as to how we have to solve. क्या क्या steps involved है। थोड़ा सा कहीं शुरुआत में complicated लगता है कि क्या करना है, अरे डिस्टेंस ये, अरे एफ ये, अरे वो टाइम वो, उसके साथ थोड़ा कंफ्यूजन होती है, इसलिए स्टेप में है। अगर फॉलो करेंगे you will come to this solution. So those steps are there for you to follow to do the actual calculations. ठीक है? यस सर। Any other question, confusion? सर ये क्वेश्चन आते हैं सर एग्जाम में? नहीं, आपका वेस्ट करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए बता रहा था। सर इसके ये एक ही वेरिएंट है कि और भी ऐसा वेरिएंट आ देंगे? एक ही वेरिएंट है, एक ही वेरिएंट। हम एक क्वेश्चन ये करते हैं, इसी में हो जाता है। नॉर्मली या तो ये आएगा या नॉर्मल प्लानिंग एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग, वो जो आएगा, जो हमने बात किया था अभी तक, वो आएगा। या बेनिफिट्स आएंगे कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ व्हील ओवर पॉइंट एंड व्हील ओवर लाइन एंड रेट ऑफ टर्न इंडिकेटर एंड ऑल दैट। तो प्रैक्टिकल एंगल्स, या हो सकता है कि आई एम अ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर रेट ऑफ टर्न इंडिकेटर। तो अगली क्लास में we'll look at the benefits of all this. वैसे हम बात कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं, but nonetheless we'll take a look at that and benefits etc. and that's about it. We'll be done. ठीक है? ओके सर। One more class about this, just summing it up. अगर हो सकेगा तो लास्ट में एक बार स्लाइड पे भी देख लेंगे। यस सर। Yes, sir. Okay. So rate of turn indicator. Okay, start going through the slides. We are just doing a review of the topic. Most part we have already completed. We have done the derivation of the relationship between velocity of the ship and the radius of turn. We have seen the planning, we have seen execution, we have seen monitoring. We also have seen wheel over line, wheel over point, and we have also seen the effect of current. Any problem with the yesterday's numerical effect of current on wheel over point? नो सर। Okay, good. So just go through it. Take a quick review. Next. 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 As we have already discussed this yesterday, you have the gyro compass here. From the gyro compass, the rate of turn indicator keeps on getting pulses. Pulses of information is constantly given to this, which may vary from 60 to 200 pulses per minute. And based on this, some readings that is coming, whatever the gyro reading, let us say it is reading 015, for example. So how it is changing is given to the rate of turn indicator. It is just converting it into per minute rate.
Next, this we are talking about F, the reaction distance. When not available, these are the values that can be safely taken. Next, what are the factors that will affect the turning ability of the ship? This may form a question. This may be a question. What are the factors that will affect the turning ability of the ship? So loading condition, displacement, that is trim, list of the vessel, turning towards the listed side is difficult. Wider ships turn with difficulty. A narrow vessel, what we call the block coefficient से जो related है, the fine form vessel and full form vessel. Next, going further. Next, the idea of turning of the vessel can help us execute the turn in controlled manner. We don't want to be in a situation where the ship is going this side or that side and where we have to apply a lot of controls to bring the vessel back on track. In the ship handling, there is a proverb or rather saying. Generally, ship handling is how to handle the ship, how to turn the ship, how to stop the ship, all that. What they say is best ship handling is when you don't have to handle the ship. You don't have to stop the ship. You don't have to take a U-turn. You don't have to take a circle. You don't require to do all that. That can happen only if you are always in control, going as per plan. So better be in a situation where you don't have to handle the ship. Next, when we are turning, these are taken into account. These are the factors that will actually be playing major role. We have already seen that angle of turn theta and the time taken, theta by t is the ROT.
which is given by V by R. Further on, you may say that derivation also. So I suppose seeing the relationship of ROT is equal to V by R, all these factors are self-evident. More the speed of the ship, ROT required will be more, because she is going to take less time. So theta by t is less, so the value ROT will be more, and vice versa, of course. Also the radius is less, we have to turn faster, because it's a shorter distance in which we are covering the turn. So we have to turn faster. Next, next. This we have done multiple times on board. In examples, we have drawn lot many times talking about this. This turn can be either which way. हमने हमेशा ये वाला example लिया, but it can also be like this. So alteration will be this much theta. Next, the derivation part. Is this clear? Yes, gentlemen. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Okay. When we are saying theta और ऊपर में c लिखा है, this is radians. The symbol for radian, we can write it like this, c on top of that, or we can write rad for radian. Theta radian, either rad, or we can place a c on top of that, which is radian. So we already have done this in the previous class. We did d is equal to r into alpha, where alpha was in radians. So यहाँ पे theta radians बोल रहे हैं. So definitely alpha will be d by r, which is what here it is. Next,
It's the same thing, same derivation, done slightly in a different way, but it is the same thing, actually same. So you may follow what we have already done in the class. आपने notes बनाए होंगे, so stick to that itself. So that's not an issue. Finally, we get to that same result. ROT is equal to V by R. Next, ये क्या design? Next, so two methods of planning we have already seen. Here it is being discussed in reference of the constant radius turn, which is execution basically, but the execution can also happen with constant ROT. In both the cases, you have to decide the radius. So master is the best person to talk to. When you are the master, people will come and talk to you. What are the factors that you will be considering when deciding the radius? This also we discussed. Remember that we also talked about the factors that affects the turning ability of the ship. That all consideration also goes into this. Not only this, but also the other factors that we saw in the beginning, that also goes into it. So number one, we have decided the radius, we have identified the object, then we have drawn the arc, and then tangential to that, initial and final force. Next, monitoring is also indicated here. Since it is a radar visual object, so we can keep it a beam, we can use the VRM. Next,
Next. The second part, planning the turn around an imaginary point. So as we have already understood, our first step is to draw the initial course, then final course. On that, we cut two segments of r tan theta by 2. We cut this 2 points from here. We cut two segments. जहाँ पे ये cut करता है, that is our center. Turn the compass and draw the arc. Next. Next. Remember that we talked about monitoring of the turn. So पुराने टाइम में तो ना एक्टिस था ना रडार इतना था, रडार में तो कुछ दिखेगा नहीं. So we had to do this by plotting the position, but now we have multiple features available in the radar. We also have एक्टिस, तो एक्टिस में वो आर्क बन ही जाएगा. तो हम अपना पोजीशन देखते रहेंगे आर्क पे. We should keep the vessel. अगर एक्टिस में हम देख रहे हैं तो एक्टिस के स्क्रीन पे हमें वो आर्क दिखेगा. We have to keep our vessel on the turn. अगर बाहर जा रहे हैं तो भीतर लेके आना है, अगर भीतर जा रहे हैं तो बाहर लेके जाना है. नेक्स्ट. I think this is for r tan theta by 2. Turning with constant ROT. This red and blue will come in the next. If we keep the constant ROT, if it is fixed, ROT is fixed, dropping speed, this is the condition that will happen. The red condition will happen. Speed is dropping, again ROT is equal to V by R. So R is equal to V by ROT. ROT वही रखेंगे, स्पीड कम होएगा तो R भी कम होएगा. Next.
wheel over line, wheel over point. Next, next slide. Next, so I think we have already done this. कोई confusion इसके बारे में? T is equal to f sin theta plus r into 1 minus cos theta. Anyone? No, no, sir. Okay, good. So next, this is what we had done already. उससे में हमने किया था, यहाँ पे drop किया था. This became r into 1 minus cos theta, and this became f sin theta. So this plus this is the t as indicated here. तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, तो इसको रहने देते हैं. Advantages of ROT. What is the benefit of having this? Already discussed in the initial class, in the introduction class. We cannot monitor the ship by looking at the gyro compass when we are turning. It is constantly changing. So monitor what? During that time, we take an interval of change, which is rate of turn. This control is more required in confined waters, helps in controlling a large vessel. We have less chances of cross-track error when we are coming out on the final course. That means if we did not have this ROT, initial course के बाद final course में जाएंगे तो कभी इधर को निकल जाएंगे तो cross-track error होगी. So if we have this ROT, it is mostly we are able to turn on the required path. अब रिफ्लेक्शन प्लॉटर वगैरह तो होता नहीं, बट दिस कुड बी डन अर्लियर ऑन. ज्यादा दिमाग नहीं खराब करेंगे उसके ऊपर. As we said, radar ARPA have got multiple features, so we can draw these lines on the radar also. You know, you have the features of drawing different kind of lines, waypoints, and this and that. So mapping feature can be used for this, and we can execute the turn looking our position on the chart. That is map on the radar. That is now going to reduce because of the presence of ECDIS. ECDIS में passage plan रहता है, सब कुछ already है. Current position भी दिखा रहा है continuously. The vessel's position is being indicated on the track, so we can just keep that vessel on the track. Monitoring has become much easier
control of the vessel has become much easier because of the ECDIS, and of course ECDIS and radar combined. Next. Okay. So here's the blank screen with you. Okay, this is the screen with you. Now some understanding questions of your understanding about the ship life. We said here that ROT is equal to V by R. R तो माइल्स में हो गया, हमने कैलकुलेट भी कर लिया, डिसाइड कर लिया. The speed which we talk about, we have two kinds of speed in the sea. We talk about speed through water and speed over ground. So which speed are we going to take for calculation of ROT? Yes, answer please. Speed over ground, speed through water. So speed through water. Okay, I have one vote, speed through water. More inputs. Sir, speed through water. Speed through water. Okay. Anybody else? Through water, sir. Okay. So we have major. दो ही लोगों ने बोला, 40 में दो ही लोगों ने बोला, but okay, we have vote for speed through water. Now, here is the understanding that you should make very, very clear. When the ship is turning, when you apply the rudder, the water is hitting the rudder and that takes the stern to this side, the vessel will turn to this side. In this condition, we have applied the starboard rudder. The stern will go to the port, the head will go to the starboard. Very good. So, speed through water will be affecting the turning of the vessel. How the vessel is turning, speed of the ship affects the turning ability of the ship. But when we are turning, the turn is from here, this point to this point. Are these 2 points in water or on ground? On ground. On ground. The time taken for the ship is to cover this distance, which is in water or ground? Ground. So, if we were calculating D, if we were taking into account V, then we were calculating the time T. What we were talking about? Which D we were talking about and what speed we were talking about? So we are talking about D on the chart, that means distance on ground. So Yes. we should be speed over ground then. Exactly. That's exactly the point. Because, for example, एक सेकेंड मैं अभी कंप्लीट कर लूं फिर बात करते हैं. I'll speak to you. Supposing here the ship is doing STW, for example, is 10 knots at this place, and if there is a current of, let us say, 10 knots, that means the speed through water of the ship is 10 knots. Is she ever going to complete the turn? जितना तेजी से आगे जा रहे हैं जहाज उतना करंट पीछे है. So speed through water is 10 knots. Yes, engine is running at 10 knots. But is she going to cover this turn? Will she ever execute this turn? No, sir. So turn will be completed by seeing how the vessel is turning, moving from here to here to here to here. How she is moving on the ground is what we are observing. Is that correct or not? Yes, sir.
So the speed to be taken is SOG. Do we have still any kind of query? Please go ahead. Sir, in constant radius term, we were talking about taking a beam bearing of an Yes. imaginary object. Yes. तो सर बीम बेयरिंग वुड मीन फ्रॉम हेडिंग ना, तो वो तो सर फिर ओवर हेडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मतलब फोर्स ओवर ग्राउंड से तो अलग है सर. Okay. So बेयरिंग को स्पीड से क्या लेना देना, सो बताइए मुझको. What if I am here, there is an object here, the bearing is this much, whether the ship is moving 0 or 10 knots or 20 knots, what is the relationship of the speed on the bearing of some object? No relation with the speed over ground, sir. Okay, now again, when you were watching, suppose the turn was here and your ship is at this place, you are watching the object abeam. So आपके हेड से 90 डिग्री पे है, अबीम है. Right, sir. Now अगर आप यहाँ पे 10 नॉट्स की स्पीड कर रहे थे, स्पीड थ्रू वाटर, and there was opposite current, it will remain abeam, all right. Is that correct or not? आप आगे जा रहे हैं 10 नॉट से, करंट आपको पीछे ले जा रहा है 10 नॉट से. सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन द, यू आर वॉकिंग ऑन द ट्रेडमिल. आप जिम में हो, बेल्ट चला दिया आपने, आप चल रहे हो 10 नॉट से आगे, बेल्ट पीछे जा रहा है, तो दीवार के रेस्पेक्ट में आप वहीं रहते हो ना. दिस इज द वॉल विच इज फिक्स्ड. तो आप उसी कमरे में रहते हो, दौड़ करके आगे दीवार से टकरा तो नहीं जाते, दरवाजे से बाहर तो नहीं निकल जाते. Yes, sir. तो शिप आपकी आगे जा रही है 10 नॉट से, पानी आपको 10 नॉट से पीछे लेके जा रहा है. सो यू आर गोइंग टू रिमेन स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट और नॉट? Exactly, sir. Now you have to watch for this object being abeam when you are moving on the ground from point A to point B. When you have come, then you have to see that whether it is abeam or not. Is that correct? Correct, sir. So question is only happening when you are moving on the ground. Is that correct? Yes, sir, over ground. So are we satisfied? Any confusion still remaining? We'll still discuss. No issue. No, sir, clear now. Thank you, sir. Here? Hanji, sir, clear. Right. Okay. So we were talking about number one, that the speed to be taken is SOG, not the speed through water. So we look at Doppler log, we look at GPS speed, that is giving us the speed over ground, because that is the speed which is taking us from point A to point B in a given time, and that time will decide what kind of ROT. ROT is equal to V by R. So V is dealing with the time taken to complete the turn. Okay, next question. Supposing your ship is doing the turn and you find yourself, number one, that you are going out. Green situation when you are going out. And you have another situation where you find yourself coming in. तो एक ग्रीन का केस है जिसमें आप दूसरी तरफ चले गए हैं. ओके, उल्टा कलर उल्टा हो गया स्टारबोर्ड पोर्ट का, लेकिन वहां पे हम स्टारबोर्ड पोर्ट नहीं बात कर रहे हैं. ट्रैक से आप भीतर की तरफ आ गए, रेड कंडीशन. ट्रैक से आप बाहर की तरफ चले गए, ग्रीन कंडीशन.
what you will prefer? Will it be okay for you to take the vessel out, or it will be easier for you to bring the vessel in? Where would you want yourself to be? अगर ट्रैक पे नहीं है तो आप भीतर रहना चाहेंगे ताकि बाहर ले जाना आसान हो, या बाहर जाएंगे ताकि भीतर लाना आसान? अल्टीमेटली आपको यहाँ पे जाना है. So which condition is favored? अगर if you are not exactly on track, then which situation is preferred? That I will be rather inside, जहाज को बाहर ले जाना आसान होगा, और यू आर थिंकिंग कि नहीं मैं बाहर रहूं तो ही ठीक है, अंदर आना मेरे लिए आसान होगा. और आरओटी यहाँ पे ऑफ कोर्स आरओटी हैज टू बी इंक्रीज्ड, एंड इन दिस केस आरओटी हैज टू बी रिड्यूस्ड. आप ज्यादा टर्न कर रहे हो, आपको कम टर्न करना है, तभी बाहर जाओगे. सो रिपीटिंग माय क्वेश्चन, what would you prefer, or what is your understanding of the situation? Taking the vessel out or reducing the ROT is easier, or increasing the ROT is easier for you on a given vessel of 200, 225, 240 meters, whatever length? Yes. बाहर जाना बेटर है. बाहर जाना बाहर बेटर है सर जाना. बाहर बेटर है मतलब you would prefer to be in this condition. सर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन. वो इन टूल्स आ गया कुछ. अच्छा, लॉग ऑफ करके लॉग इन करो तो आ जाएगा मेरे ख्याल से, या अभी आ गया होगा, देख लो एक बार. हाँ अब आ गया सर. हाँ ये सर आउटसाइड वाला जो है. You will prefer to be an outside, so that when you want to increase the ROT you can give helm and the vessel will turn inside. Is that correct? Yes sir, correct. Anybody else? Any other words? Sir, inside. Okay, we have another word for inside. Justify your answer. Sir, if we have more rate of turn, then we can give counter helm and keep we will be coming close to the point. Means we just have to give a lower counter helm to keep the vessel on the track. Okay. All right. To explain this situation, when we are turning like this, if we are coming here, let us say for example we are in this situation, अगर मैं यहाँ पे मिडशिप कर दूं, रडर को मिडशिप कर दूं, तो वो और भीतर जाएगी कि बाहर तरफ ही निकलने लगेगी? It will go inside. अगर मैंने मिडशिप कर दिया तो वो और भीतर जाएगी कि सीधे निकलेगी? मिडशिप कर दिया तो अंदर जाएगी सर. अंदर जाएगी. नेगेटिव. थोड़ा सा जो मुड़ रही थी सर, तो मुड़ रही थी, उसके बाद मोमेंटम के चलते सीधा निकल जाएगी ना. मोमेंटम क्या कहता है? An object will continue to do what it is doing, either at rest or in motion, until and unless an external force is applied. आपने external force apply करना कम कर दिया, खत्म कर दिया, रडर हटा दिया आपने, बट सर तो अभी तो से वो सीधे निकलेगी या नहीं? सर अभी तो टर्न हो रहा था. अगर उस समय इंस्टेंटली मिडशिप देंगे तो सर वो फिर भी तो टर्न करेगा, फिर इसके बाद जाके स्टडी होगा. ठीक है. अब मान लो आपने 30 सेकंड्स हो चुके, 20 सेकंड्स हो चुके आपको मिडशिप किए हुए, जितना टर्न करना था मोमेंटम उसमें भी थी कि हाँ टर्न कर रहा था तो टर्न करेगा, लेकिन अब जब रडर 0 हो चुका है तो अल्टीमेटली मान लो कि इसको फिर से अगर देखा जाए तो वेसल वाज टर्निंग लाइक दिस, आपने यहाँ पे दे दिया मिडशिप कर दिया, इस पॉइंट पे मिडशिप कर दिया. अब जब जहाज आगे जाने को थोड़ा सा और मुड़ेगा और उसके बाद सीधा हो जाएगा या? यस सर, सीधा हो जाएगा. That means it has already got the tendency to go out. The ship, when not handled, has the tendency to go out.
एक पत्थर को आप रस्सी में बांध के हाथ से घुमाते हैं, जब छोड़ते हैं तो पत्थर किधर को जाता है? गोल घूमता रहता है, सीधा भाग जाता है। सीधा जाता था टेंजेंशियल। तो वही है ना, ये भी तो वही सीधा भागेगा ना। जैसे ही आपने छोड़ा यहाँ पे रस्सी को, रडर जीरो कर दिया, तो वो सीधी भागेगी या नहीं? यस। That means a vessel already has the tendency to go out. इस केस में आपने थोड़ा सा उसको हेल्प दिया, पोर्ट रडर दिया, तो धड़धड़ा के भागेगी इस तरफ। That means taking the vessel from inside to outside is easier. If the vessel was out here, अगर यहाँ पे थी, now you have to work against the momentum of the ship. Again she is trying to go straight, momentum is taking her out. Now you have to work against her momentum, apply lot of rudder to bring her in. So the takeaway from here is that ROT should be overestimated. थोड़ा हम भीतर की तरफ जाने को देखें, जब जरूरत पड़ेगी तो बाहर ले जाना आसान होगा मेरे लिए। लेकिन अगर कम कैलकुलेट कर दिया और शहर बाहर जा रही है तो वापस लेके आना डिफिकल्ट होगा मेरे, बिकॉज द रडर हैज टू वर्क अगेंस्ट द मोमेंटम। If she is inside, so again it will have to work against the momentum of turning, but otherwise straight line में जो जहाज जा रही है उसको assist करेंगे हम by counter rudder, and it will be easier for to reduce the ROT. Increasing ROT is difficult, reducing ROT is easy when we are already into turn. Is that okay? यस। Discussion is appealing. हाँ बोलिए। जस्ट एक क्वेश्चन सर, ओके बोलिए। जब सर आरओटी सर जब इंक्रीज हो रहा है तो सर उस टाइम पे इंक्रीजिंग इजी होगा ना सर, रिड्यूसिंग नहीं, मुश्किल होगा ना सर? इंक्रीज नहीं हो रहा। हमने क्या कहा, सिचुएशन है आपके पास, आप टर्न कर रहे हैं, जहाज ट्रैक पे यहाँ पे होना चाहिए था। राइट नाउ यू आर ऑलरेडी टर्निंग एंड फाइंडिंग योरसेल्फ एट दिस पोजीशन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू जनरली, अगर रेड कंडीशन में आप हैं, जहाज रेड पॉइंट पे है, तो व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सर अंदर आने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए आप और स्टारबोर्ड रडर देंगे। करेक्ट सर, स्टारबोर्ड दूंगा। अभी जिस कंडीशन में शिप है वहां से वो नॉर्मली सीधा भागने की कोशिश कर रहा है। सर वो अभी सर स्टेडी है क्या सर, मतलब वो जीरो नहीं पे नहीं, है क्या? स्टेडी नहीं है, नहीं स्टेडी नहीं है। मैंने फिर से वही एग्जांपल बोल रहा हूँ कि पत्थर बांध के हाथ में घुमा रहे हैं। अच्छा जब हाँ सर, ठीक है छोड़ते ठीक है ठीक है। तो आप रडर से इसको घुमा रहे थे ना, रडर एक्स्ट्रा फोर्स लगा हुआ है तब वो घूम रहा है ना, लेकिन जी सर। घूम रहा है। चलिए, तो ये अभी थोड़ी सी टेंडेंसी है इधर को जाएगा, देयर ठीक है। इज लिटिल बिट ऑफ टेंडेंसी कि ये इधर को मुड़ रहा है अभी, लेकिन वहां से अगर कोई हेल्प नहीं देंगे तो सीधा भाग जाएगा या नहीं? हाँ सर ठीक है, भाग जाएगा। तो यहाँ पे आप ज्यादा रडर दे के इसको भीतर लाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द ट्रैक। करेक्ट सर। एंड वो सीधी जो जा रही थी उसके अगेंस्ट आप काम करेंगे, ज्यादा रडर देंगे। हाँ सर, अंदर को ज्यादा दूंगा, स्टारबोर्ड साइड में। तो जहाज रिस्पॉन्ड करेगा इसको या इस कंडीशन में रिस्पॉन्ड करेगा? इफ यू फाइंड योरसेल्फ हियर एट दिस प्लेस, ऑलरेडी इट इज गोइंग आउट, थोड़ा सा काउंटर देंगे इसको तो सीधा बाहर को भागेगा या नहीं? So in short, this is the situation, preferred situation. If we are inside the turn, it is okay, we can reduce the ROT much easy. We don't want to be in the red condition that we are seeing here. We don't want to be out of the turn, out of the track. इस कंडीशन में we will prefer not to be there. इस कंडीशन में we will be preferring to be. So overestimate ROT, not underestimate. Underestimate करेंगे तो बाहर चले जाएंगे। घूमना है ज्यादा, घूम गए कम,
तो बाहर निकल जाएंगे। So again, bottom line, increasing ROT is difficult, reducing ROT is easy when we are already in the turn. So overestimate ROT. 40 knots का speed, 2 miles radius, ROT required is 7 degrees per minute. You might think of 7.5. It is okay. When you have to reduce, you can reduce it easy, but you should not do 6 degrees, 6.5 degrees, because then you are going out and turning will be little difficult. Depending on situation, it can be okay कि ठीक है चलो चला गया तो क्या हुआ, थोड़ा सा जगह तो है ना अपने पास. That is all conditional. But talking about the behavior of the ship and your action, overestimate ROT, reducing ROT will be easy. Also, during the turn, when we are executing the turn, initially large helm will be required. जैसे ही घूमना शुरू होती है तो हम इसको रडर कम कर देंगे थोड़ा, so that we just maintain the ROT. So few precautions देखते हैं यहाँ पे. Couple of points we talked about. Just take a look. All that we discussed just now. जब व्हील ओवर पॉइंट पे हम हेल्म दे रहे हैं तो ज्यादा हेल्म देंगे ताकि रिएक्शन डिस्टेंस के भीतर भीतर में जहाज घूमने शुरू हो जाए और वी आर एबल टू ऑब्टेन द ROT कैलकुलेट जो किया है, दैट शुड बी ऑब्टेन. वंस इट इज ऑब्टेनिंग तो रडर कम कर दिया, फिर मेंटेन करने के लिए सिर्फ साथ साथ में असिस्ट कर रहे. यहाँ से एक चीज और दिखता है, यहाँ से एक चीज और दिखता है कि जब जहाज नहीं घूम रहे थे तो घुमाने के लिए ज्यादा मेहनत लगी ना, तभी ज्यादा रडर मांग रहा है. जब जहाज सीधी चल रही है और घुमाना चाहते हैं तो ज्यादा रडर देना पड़ता है, आपको नहीं है ना? Yes, sir. यस सर. तो जहाज को उसके मोशन से घुमाने के लिए ज्यादा रडर देने की जरूरत है. जब ऑलरेडी घूम रही है तो थोड़ा थोड़ा रडर से काम चल रहा है. सेम थिंग व्हेन शी इज टर्निंग एंड शी इज ऑलरेडी आउट, तो उसको घुमाना फिर से मुश्किल होगा ना ज्यादा. Anyway, we have discussed this, so I think it is clear. More precautions. Precautions when we are using a given type of execution. अगर constant radius turn है तो speed should be monitored and ROT should be altered accordingly. Reducing speed, reducing ROT also. If we are doing constant ROT जिसमें average speed लिया है, then also we have to monitor the turn very closely, because it was only an estimation and it can be little bit up and down. So how much of speed drop is going to be there? It cannot be just an arbitrary value. क्या चाहिए इतना है इतना कर लेते हैं. There are practical things to be considered, and that is why we take the assistance of master who has got a lot of experience of handling the ship. So if we are going in or out, we have to manage the turn accordingly. So constant ROT में it is not necessarily constant all the way. Initial तो आप दे दोगे, but monitoring के बाद it may require little bit of changes here and there, either reducing ROT or increasing ROT. It may be required.
बहुत टाइम लेके डिस्कस किया, तो नो मोर डिस्कशन अबाउट दिस पॉइंट. Next, we are at the end of the topic. We are at the end of the class timing also. अरे ये क्या हो गया? So completed just in time. All right, are we good? All okay?